Welcome back to another video. I am Ayaz and I hope all of you are doing very well. In the previous video, we discussed three things. What is the condition that tells us whether the differential equation is an exact differential equation or not? What is the general solution of an exact differential equation? And how to find the general solution of an exact differential equation. In this video, I will solve one more example and we will see how we can find the general solution of an exact differential equation. Let's get started. Y cos x plus 2x e raised to power y d of x plus sin x plus x square e raised to power y minus 1 d of y equal to 0. This is equation number 1. So this is our problem. First we will see whether one is an exact differential equation or not. So यहाँ पे जो हमारे पास dx के साथ जो भी expression होगा that will be our m. So m is y cos x plus 2x e raised to power y, and the expression with dy that will be n. So sin of x plus x square e raised to power y minus 1. First, we will differentiate m partially with respect to y. So partial m, our partial y is equal to partial our partial y. This is y cos of x plus 2x e raised to power y. अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, हम हर एक टर्म का अलग डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली. इट मीन्स y के अलावा जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा हम उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. सो यहाँ पे पार्शियल आवर पार्शियल y cos ऑफ x प्लस पार्शियल आवर पार्शियल y 2x e रेज टू पावर y. cos ऑफ x ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, जबकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दैट विल बी 1 प्लस 2x हमारे पास कांस्टेंट होगा और e रेज टू पावर y एक्सपोनेंशियल है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास e रेज टू पावर y होगा. तो इट मीन्स partial m over partial y, this will be cos of x plus 2x e raised to power y. Similarly, we will find partial n over partial x. Now we are differentiating n partially with respect to x. So partial over partial x, this will be sin of x plus x square e raised to power y minus 1. Here we have three terms. So हम हर एक टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे. So this will be x square e raised to power y minus partial over partial x. This will be 1. So यहाँ पे हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. इट मीन्स x के अलावा जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास y है तो हम उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. सो साइन ऑफ x इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी cos ऑफ x प्लस e raised to power y. This is constant because we are partially differentiating with respect to x. So हम इसको बाहर लाएंगे डेरिवेटिव से and we will differentiate x square only. So the derivative of x square will be 2x minus 1 is constant, so derivative will be 0. So this is cos of x plus 2x e raised to power y. This is our partial n over partial x. So we can see that partial m, this is our partial m over partial y. So this is cos of x plus 2x e raised to power y
and partial n over partial x cos of x plus 2x e raised to power y. So partial m over partial y is equal to partial n over partial x. It means equation 1 is an exact differential equation. So 1 is an exact differential equation. Now we will see how to find the general solution of 1. Therefore, the general solution of 1 is, and we know that the formula for the general solution of an exact differential equation is integration m d of x plus integration of terms independent of x in n d of y equal to c. This is a formula for the general solution of an exact differential equation. अब इसके बाद यहाँ पे हमने m की वैल्यू को लेना है और यहाँ पे हमने n की वो टर्म्स लेनी है जिनके अंदर x मौजूद नहीं है. सो इंटीग्रेशन m dx. So m is, this is our m. Okay, so m हमारे पास है y cos x plus 2x e raised to power y. So we will put the value of m here. So y cos of x plus 2x e raised to power y d of x plus टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x इन n. इससे मुराद ये है कि n की वो टर्म्स जिनमें x मौजूद नहीं है. सो दिस इज आवर n. Okay, and we can see that n has three terms. The first one is sin x, the second one is x raised to power y, and the third one is 1. So basically हमारे पास तीन टर्म्स हैं और हमने वो टर्म्स लेनी है जिनमें x मौजूद नहीं है. तो साइन x ये इन टर्म्स ऑफ x है, हम इसको छोड़ देंगे. जो सेकंड टर्म हमारे पास x के रेज़ टू पावर y, इसके अंदर भी x आ रहा है तो हम इसको भी छोड़ देंगे. तो हमारे पास टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी n की वो टर्म्स जिसमें x नहीं है, दैट इज़ -1. ओके, तो हमने इसको माइनस के साथ ही लेना है. तो this will be -1 d of y equal to. मेक श्योर कि आप m को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लें और ये वाला जो एक्सप्रेशन है टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x इन n, इसको अपने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है. अब यहाँ पे हम इनको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे. सो इट विल बी समथिंग लाइक y cos of x d of x प्लस 2x e raised to power y d of x minus 1 d of y equal to c. We are integrating with respect to x, so y will be constant. So integration of cos of x d of x plus, again we are integrating with respect to x, so 2 and e raised to power y ये हमारे पास कांस्टेंट होंगे और हम इनको इंटीग्रेशन से बाहर लाएंगे. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y इज y. सो y एंड cos ऑफ x, इसकी जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी साइन ऑफ x प्लस 2 e raised to power y, एंड x की जो इंटीग्रेशन है हमारे पास दैट विल बी x स्क्वायर ओवर 2 माइनस y इक्वल टू c. सो y साइन ऑफ x प्लस
यहाँ से ये टू और टू ये कैंसिल होंगे और हमारे पास होगा ई रेज टू पावर वाई एक्स स्क्वायर minus y equal to c. So this is the general solution of equation 1, y sine of x plus e raised to power y x square minus y equal to c. Thank you so much.